Hi, and a very good morning to all of you. Welcome back to a session of Daily Current Affairs. So, this is Arushi here, your mentor for Daily Current Affairs. We will soon be launching our course for NABARD Current Affairs. Not just current affairs, we will soon be launching our full batch for NABARD Grade A from 19 June and onwards. So, you can go to our website. If you want, you can buy that course for yourself if you think that you need the guidance and the mentorship, if you think that your basic concepts and everything is not clear. And if you just want to practice on the test, if you have already taken classes before and you just want to practice the test series because you're 100% sure that your basic concepts in all the subjects are crystal clear, then you can also buy a test series. Just make sure that you use the code Y580 to purchase the full pack course of NABARD Grade A and Y580S to just purchase the test series. Okay. Good morning, Acoustic. Welcome to my session. So yes, these are the two codes you should remember. On both these codes, you will get a 77% off, right? अगर आप पूरा बैच लेते हो 77% ऑफ आपको कोर्स पे मिलेगा. टेस्ट सीरीज लेते हो तो 77% ऑफ आपको टेस्ट सीरीज पे भी मिलेगा. Other than that, if you don't want to buy just one course for NABARD, but you want to buy all the courses, the combined package for that provides you with the courses, test series as well as the study material for full 1 year for all the important bank exams that you are aspiring for, like RBI Grade B, SEBI Grade A, NABARD Grade A, as well as our regional rural bank or IBPS. We also have a bank Maha plus code, bank Maha plus. So here also the course is 30k plus validity 1 year की है, but if you use the code Y580 you will get 77% off and you will just have to pay 7,000. That is 7k. Okay, so it will be an investment for 1 year. It will be an investment for 1 year. So I think 7k is very very reasonable. क्योंकि अगर आप अलग से कोई SBI PO का टेस्ट सीरीज खरीदने जाओगे तो it will cost you around 10,000 alone today's time. Okay, but this is a very cost beneficial package for all of you. 7,000 में आपको सब कुछ मिल रहा है. So do make sure that you make a wise decision. Think about it. जल्दबाजी में कोई decision मत लेना. सोचो और फिर decide करो. Okay, if you want it, if you need it, then go ahead. These are the codes that I've shared it with you. So let's start with today's current affairs. Yes, of course, if you download all these courses from the app, other than 77% off, you'll get 100 additional rupees off. Okay. इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स. नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में क्या आ जाता है यार? सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये रख लो कि जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमको उसमें से स्टैटिक जीके का पोर्शन डिराइव करके पढ़ना होता है. ठीक है, जहाँ हमने कैच कर लिया कि यस ये इम्पॉर्टेंट नेशनल इवेंट है, यहाँ पे we have to study these are the key takeaways from this particular news or an event. Okay, so इसी तरह एक MOU साइन हुआ है अपेदा बिटवीन अपेदा एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम और आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहट में जो है, दैट इज अ डिस्ट्रिक्ट इन आसाम. So APEDA and Assam have actually signed an MOU for the export promotion of agriculture commodities in that state. Okay, so that is why this question is also here in the news. The question is also here in the MCQ. Question is about APEDA, agriculture production, agriculture and processed food प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज अपेदा. ये कौन सी मिनिस्ट्री, इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी, आपको ये बताना है. सो ऑफ कोर्स एज ऑलवेज ऑप्शंस आर ऑलवेज कंफ्यूजिंग. ऑप्शंस हैव टू बी कंफ्यूजिंग. कंफ्यूज नहीं होगे तो आप गलत कैसे करोगे, गलत नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे. सही आंसर मार्क करना हमेशा सबके लिए ईजी होता है, राइट? अगर ऑप्शन ईजी दे दूंगी तो सही आंसर आप अपने आप मार्क कर लोगे, बट गलत कंफ्यूजिंग ऑप्शन दूंगी तो आप गलती करोगे तो आप सीखोगे. That is the key here, that is the catch here. That is why we practice our daily current affairs through MCQs itself. Okay, so Ministry of Food Processing Industries नहीं है, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare भी नहीं है. Commerce and Industry is the correct answer. Ministry of Commerce and Industry. Ministry of Commerce and Industry is the nodal ministry for APEDA. Okay, तो जितनी भी एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रीज होती है, स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, यूजुअली ऑल ऑफ देम कम अंडर
Ministry of Commerce and Industries only. So yes, let's have a look at some of the key statistics regarding the export of agri products in Northeast region. तो 85.34% तक का ग्रोथ आया है, US $17.2 billion का. बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस है. सो फॉर एग्जाम्पल क्या, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको कहते हैं A2A इनिशिएटिव के बारे में आप लोग ध्यान रखो. इट इज नोन एज एग्री टू एविएशन. ओके, एग्री टू एविएशन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है दैट taps the potential of local agricultural produce, specially focused on GI tags, agriculture products having a GI tags, okay, and they directly connect them to a local exporter, and they are directly sent as a consignment or a cargo via airlines to various countries, okay. So the farm is actually directly connected with the airport for export of local agri produce to various countries. तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे examples क्या हैं? त्रिपुरा का जैक फ्रूट इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड टू लंदन. ओके, सो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं. लाइक असम का एक इंडिजिनस फ्रूट है that is also known as a variety of grape in Assam. A variety of grape in Assam was exported for the first time to Dubai. So all these facts are there, right? All these statistics and data that we have. Leteku, that is Burmese grape. Leteku from Assam, jackfruit from Tripura. These are all actually being exported. King chili also belongs to Assam. So these are being exported to countries. These are being exported to cities. Person is sitting in London, right? In Dubai, they are all importing such important exotic northeastern fruits and other agricultural products. So yes, it has seen a definite rise, not only in growth rate but also in the rate of export. That is, agriculture in the northeast region has become more and more export oriented over the years, so that helps the local farmers of that region in the long way. Okay, so yes, horticulture को भी promote करेगा. And major export destinations, as we have already discussed, they remain to be Middle East, UK, Bangladesh, Europe. Other than that, let me share with another important news for you guys. Yes, tell me in the comments below which is the first state in India to go completely organic. सबसे पहला स्टेट इंडिया का कौन सा है जिसको फुल्ली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट मिला है? द आंसर इज़ वेरी सिंपल. ये कोई बहुत लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है, काफ़ी साल पुरानी न्यूज़ है, बट आज की डेट में भी इंपॉर्टेंट है. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. Moving on to the next question, which of the following has become the 20th country to adopt euro as a currency? So euro market, you all know, because European Union is actually a bloc, an economic bloc. ओके, कब फॉर्म हुआ था यूरोपियन यूनियन? कमेंट करके बताइए. एंड उस इकोनॉमिक ब्लॉक का कॉमन करेंसी वाज यूरो. जितने भी मार्केट एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं बिटवीन द टू कंट्रीज, दे वर ईज डाउन और दे वर they became barrier free. The movement of people and goods across the borders became barrier free because of the European Union. So it is a very important and a significant trading bloc. आज की डेट में ऐसा हुआ है कि 20 साल के बाद पहली बार euro currency has depreciated significantly against the dollar because it is hardening up because of the hike in FedEx and tightening of the monetary policy. Of course, Indian currency we are already seeing it depreciating to a significant extent, but it is for the first time in 20 years. 20 साल बाद पहली बार euro currency has also depreciated against dollar. Okay, so to strengthen that, to expand its market, Croatia has become the 20th country to adopt euro as a currency. So let me tell you that European Union with 28 countries hai, but not all of them have adopted euro as a currency. There are still many countries who use their own domestic currencies.
But after 8 years, 20 years के बाद euro currency has depreciated on against dollar. But after 8 years, euro currency has seen an expansion in market, with Croatia joining it as a share of currency, right? क्रोशिया adopting euro currency as its own currency. इससे पहले क्रोशिया की currency क्या थी? It was क्यूना और कूना, वॉट एवर इट इज, कूनो, अजीब सा नाम है बट कैसे है, एग्जाम में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे आएगा नहीं क्योंकि ये करेंसी डिस्कार्ड कर दी है एंड यूरो करेंसी अडॉप्ट कर रही है. ओके, सो बहुत सारी कंट्रीज हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द कंट्रीज हु डू नॉट यूज. इस लिस्ट में अब तक क्रोशिया भी इंक्लूडेड था, बट नाउ क्रोशिया uses euro currency, and these are still the countries, some of the significant countries among the list: Denmark, Sweden, Hungary, Poland. डेनमार्क, स्वीडन, हंगरी, पोलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज उस in the continent of Europe that use their own currency. Sorry. Current currency European Croatian kuna को replace करके Croatia has become the 20th member country to adopt euro as a currency. Adoption of euro single currency. So yes, we will discuss, maybe I'll take up a session on various types of currencies, right? Petrodollar, euro currency. What are these things? What are the significance? To let me know. If you need such a session, you need conceptual clarity regarding that. Which of the following is a pioneer in renewable energy firm to refinance? So बहुत साल पहले एक तरह का बॉन्ड आया था, that was known as green bond or masala bond or oil bond. So what are these green bonds? So usually when we borrow from the forex market, usually the denomination is in US dollar, right? The idea behind green bond, सबसे पहला green bond हमारी country में yes बैंक ने issue किया था, right, in the year 2008. ग्रीन बॉन्ड का आइडिया ये है टू इशू बॉन्ड्स इन रुपी डिनोमिनेशन, राइट. रुपी डिनोमिनेशन में बॉन्ड्स को इशू करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, एंड ग्रीन बॉन्ड मीन्स इशूइंग ऑफ बॉन्ड्स इन रुपी डिनोमिनेशन दैट कंट्रीब्यूट टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन. दैट इज द आइडिया बिहाइंड ग्रीन बॉन्ड. ओके, converting US dollar bond into Indian rupee bond is also one of the significant milestone. So पहले कुछ डिस्कस कर लेते, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी ले आते. ग्रीन बॉन्ड क्या होता है और उसके फायदे क्या होते हैं, वाई आर वी लुकिंग अप आफ्टर ग्रीन बॉन्ड. इसी तरह से मसाला बॉन्ड भी होता है, ऑयल बॉन्ड भी होता है. वी विल डिस्कस अबाउट दैट, बट क्योंकि ये अभी रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेट्स जस्ट कीप आवर फोकस रेलेवेंट टू द ग्रीन बॉन्ड. ओके, ग्रीन बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? ग्रीन बॉन्ड समझ लेते हैं, इज अ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ट्रेडेड इन द इंटरनेशनल मार्केट. नंबर वन, व्हाट आर द बेनिफिट्स होते हैं, इट प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ हेजिंग अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन द फॉरेक्स मार्केट. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर रुपये की वैल्यू आज की डेट में डेप्रिशिएट हो रही है अगेंस्ट द US डॉलर एंड सम फर्म हैज ऑलरेडी परचेज द bond market in the US denomination, so it may have to suffer some losses, right? It may have to suffer some losses. So to avoid that, some losses because of fluctuation in the value, right? Fluctuation in the value. So पहले अगर उनको कोई इंटरेस्ट रेट मिल रहा था on a particular bond, it was good when the rupee was 75 rupees against the US dollar, and suppose the firm was earning an interest rate, say $5 per bond, right? $5 per bond. On converting it, they would get the equivalent amounts, 5 into 75, that much INR. Now the interest rate remaining the same, they will get more INR. So that more INR is actually inflation indexed. क्यों? क्योंकि अभी इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है हमारी कंट्री में, तो मॉनेटरी जो गेन है, द गेन इन द मॉनेटरी वैल्यू इज़ नॉट एज मच. इसी तरह उल्टा होता है, अगर US बॉन्ड खरीदा और अगर हमको INR में उनको इंटरेस्ट पे करना हो रहा था, तो 75 रुपीज़ को अगर डॉलर में, पहले $1 को कन्वर्ट करने के लिए 75 रुपीज़ चाहिए थे, एंड इन पेइंग द इंटरेस्ट रेट ऑन दैट बेसिस, ऑन दैट एक्सचेंज रेट वॉज comparatively cheaper. Now we have to pay 80 rupees to convert to purchase $1 and pay the interest rate on a bond.
now paying the interest rate and servicing the bond debt has become more and more expensive. So what will happen is when we purchase green bonds are already denominated in Indian rupee. When the green bonds are already denominated in Indian rupee, it provides a hedging for the future against the payment of interest. So जब हम लोगों ने बॉन्ड खरीदा उस वक्त जो इंटरेस्ट रेट की वैल्यू सेट हो गई है दैट यू हैव टू पे 5,000 रुपीज पर मंथ ऑन दैट पर्टिकुलर बॉन्ड when the US rupee exchange rate was 75 per dollar, and today it is 80 per dollar, but still the interest rate is rupees 5,000 per bond on that particular value. Why? Because the bond that we purchased was already denominated in the Indian currency. So that is the benefit. इसको हम लोग क्या कहते हैं, hedging कहते हैं. इसको हम लोग कहते हैं hedging against fluctuation, hedging against extreme fluctuation in foreign currency. So ये जो MCQ है, this MCQ that you are reading here, Indian Renewable Energy Firm ऐसी कौन सी पहली Indian Renewable Energy Firm है to refinance dollar denominated bonds. डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को रीफाइनेंस करने के लिए कौन सी ऐसी पहली इंडियन डिनोमिनेटेड फर्म है? द करेक्ट आंसर इज रिन्यू पावर. रिन्यू पावर, none of these are all important institutes for renewable energy, but correct answer here is Renew Power is the first such agency to convert dollar denominated bond. 2024 maturity dollar denominated bond है, इसको INR में convert कर दिया है इन्होंने. So it will future में और भी ज़्यादा fluctuation होता है तो it will help it against the losses in servicing of the debt. Refinance means, refinance basically is a process wherein a third party comes and purchases the bond in US dollar. That okay, these two, Renew Power and some XYZ firm in the US, they have traded in US dollar. I will purchase those bonds in US dollar, and in exchange I will give them the equivalent value of that amount in INR denomination to Renew firm. So what I am a refinance agency. So that is what refinancing basically means. It involves a third party that facilitates the conversion. Okay. Worth $252 million के bonds issue हुए थे 2019 में, and इनका maturity year was 2024, and now they have been converted to rupee dominated bonds. So I hope this was actually a very interesting, very important news. Under which of the following acts have RBI issued? So RBI usually अभी बहुत ही trending और hot topic चल रहा है knowledge economy market में. Every other YouTube channel, every other coaching institute is talking about internationalization of Indian rupee. Everyone is talking about Nostro and Vostro account. Nostro Vostro account के बारे में सब बात कर रहे हैं. We should know that India और ईरान के पास पहले से Nostro Vostro की फैसिलिटी अवेलेबल थी, right? So करेंसी स्वैप अग्रीमेंट इंडिया और जापान के बीच में सबसे पहले हुआ था $75 million का, right? 75 million US dollars का करेंसी स्वैप, in the sense that रुपी और येन का ही एक्सचेंज होगा with no involvement of US dollar. So yes, you can see कैसे initiatives लिए जा रहे हैं because the rupee is hardening against dollar. How our country is taking up initiatives to mitigate that loss or mitigate that depreciation by converting bonds into Indian denomination, by taking up currency swap agreements beforehand, well ahead in time with countries like Japan, right? And also taking up initiatives and legislations and enactments under Foreign Exchange Management Act to internationalize the payments of export and import and incentives and invoices in Indian rupee instead of Indian dollar. So these are some of the measures that the government is taking up to basically mitigate the losses that our foreign exchange reserve may suffer because only because we are trading in US dollars. So my question is that ये step पहले क्यों नहीं आया? Why so late? देर आए दुरुस्त है, of course, but this is a very, very important, very significant step towards Indian economy, right? Especially in foreign exchange market mein. This should have been introduced way before. Okay.
सो पेमेंट एंड सेटलमेंट, इनवॉइसेस, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सब फेमा में अमेंडमेंट होके जितना भी इंटरनेशनल पेमेंट्स होंगे नाउ फ्रॉम नाउ ऑन दे विल बी डन इन इंडियन रुपी, दैट इज INR. नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी. यस, सिग्निफिकेंस और भी ज़्यादा है, बहुत सारे इम्प्लीकेशंस है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं इससे जुड़ी. maybe we'll take up a session on this, okay, internationalization of Indian rupee. But for now RBI issued directions. We have to know the basic underlying meaning क्या है. जितना भी important international payment होगा वो अब Indian currency that is INR में होगा. Okay, so yes, FEMA के अंडर amendment हुआ है. Okay, let's move on to the next question. Which of the following ministries launched Ek Bharat Shresth Bharat scheme in 2015? So Ek Bharat Shresth Bharat भी किसी reason से news में है, and that is why this government scheme is being asked in the question. एक भारत श्रेष्ठ भारत 2015 में कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? You have to answer is again a very tricky question. Most of the people will answer Ministry of Culture या Tourism में से मार्क करके चले आएंगे, आंसर गलत हो जाएगा. Okay. Correct answer here is Ministry of Education. Okay. तो ये आप इंश्योर कर लो जब भी आप ESI या ARD जैसा सब्जेक्ट पढ़ो और आप किसी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो या किसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पढ़ रहे हो, तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप गूगल सर्च कर लो, उस स्कीम के ही नाम से आप गूगल सर्च कर लो, आपको एक दो रिजल्ट बाद मिनिस्ट्री का नाम भी पता चल जाएगा. So neither the Ministry of Tourism nor the Ministry of Culture, but it is the Ministry of Education that has launched Ek Bharat Shresth Bharat, जो कि October 31 सरदार वल्लभ भाई जी पटेल की बर्थ एनिवर्सरी के दिन लॉन्च हुआ था, for the unification, for the exchange of knowledge of different diverse cultures within our country across the states. तो यूनिफिकेशन कैंपेन है, यूनिफिकेशन स्कीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत. और ये न्यूज़ में क्यों है? यूज में इसलिए बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर है अभी एक अग्रीमेंट साइन किया सिक्किम के साथ टू बूस्ट कल्टिवेशन ऑफ सैफ्रॉन एंड अदर क्रॉप्स. सैफ्रॉन जिसको जम्मू एंड कश्मीर में ज़ाफ़रान भी कहते हैं, वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ज़ाफ़रान. जम्मू एंड कश्मीर के जो लो लैंड्स हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर is divided, right? Actually high hilly terrains, extremely hilly terrains and Himalayan lowlands जिसको कहते हैं. Himalayan lowlands में जो tribes होती हैं जो migrate करती हैं with the change of the season, when they migrate from hilly season to the lowlands during the winter season, they cultivate saffron. Saffron is a very rare and very expensive product. Worldwide इसका demand है saffron और saffron. ओके, सिक्किम एंड जम्मू कश्मीर दोनों ने एक MOU साइन किया है टू बूस्ट द कल्टिवेशन ऑफ सैफ्रॉन. द अग्रीमेंट वाज साइंड बाय LG गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा एंड द गवर्नर ऑफ सिक्किम, ओ गॉड, एंड द गवर्नर ऑफ सिक्किम मिस्टर गंगा प्रसाद जी. Yes, so tell me, सिक्किम की कुछ important bird sanctuaries. सिक्किम में of course you all know, you should know that there is wildlife World Heritage Site, UNESCO World Heritage Site, Kanchenjunga National Park. Okay, why it is a World Heritage Site? Because Kanchenjunga National Park contains terrains of all the biodiversity that you can find, plain, lowlands, forests and hilly terrains and sand, ice desert. Okay, Kanchenjunga National Park, Sikkim, a UNESCO World Heritage Site, remember that, and also home to Ganga Prasad, Keetam Bird Sanctuary. Keetam Bird Sanctuary is also there in Sikkim. So yes, Ek Bharat Shresth Bharat scheme to boost cultivation of saffron and other crops. Which among the following players have created history by winning 80 matches in all the Grand Slams? So Wimbledon अब तक का सबसे important event है Wimbledon. Okay, it is the most oldest and the most important tennis event in Wimbledon. I think 1980s में कभी start हुआ था और
इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा पुराना है, बहुत पुराना है। ओके, तो ये विंबलडन जो इवेंट है, जो ग्रैंड स्लैम है, उसको जीतने में उसको Novak Djokovic has won the 180 matches in a row in 4 Grand Slams. 4 Grand Slams, 80 matches in a row. Novak Djokovic is the winning player. Okay, so Wimbledon basically 1877 में लॉन्च हुआ था, या it's that old. ओके, और उसको जीतने वाले जो प्लेयर हैं, नोवाक जोविक, ही हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ 80 मैचेस इन 4 ग्रैंड स्लैम्स. ओके, सो दीज आर ऑल, दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़. ये एक्चुअली विंबलडन का 135th एडिशन है, विंबलडन का 135th ग्रैंड स्लैम एडिशन है. Okay, so yes, Novak Djokovic is the player. Other than that, you should know that हमारी country में Rohit Sharma has also created history. Rohit Sharma, Indian batsman Rohit Sharma has created history by I think by making largest number of centuries in T20 international. Do let me know and confirm it in the comments below. There is some news about Rohit Sharma. He has created history in something. या तो स्कोर सबसे ज़्यादा आया है, या फिर गुड मॉर्निंग राहुल, हाउ आर यू, वेलकम टू द सेशन. आई थिंक आवर क्लास इज़ अबाउट टू गेट ओवर. आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी डिस्कस करने को. द कंटेंट फॉर टुडेज करंट अफेयर्स वाज क्वाइट लिमिटेड, बट द पॉइंट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट. कम था पर इम्पॉर्टेंट और पावरफुल बहुत ज़्यादा था. सो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सेलिब्रेट खर्ची फेस्टिवल. सो यस, ये स्टैटिक जीके में आ जाता है. जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो स्टेट्स में सेलिब्रेट हो रहे हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो खर्ची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ त्रिपुरा. हावड़ा रिवर में, हावड़ा, जैसे हम लोग गंगा स्नान करते हैं, दिवाली के बाद गंगा स्नान आता है. वी हैव अ कल्चर दैट वी गो एंड टेक अ डिप इन द होली रिवर ऑफ गंगा टू वॉश अवे आवर सिंस. Likewise, similar to Ganga Snan, this is this Kharchi festival that is celebrated in Tripura, where people go and take a dip in river Haura. River Haura is a river in Tripura, and Kharchi festival basically comes from the word khar. Khar means washing of sins. Washing of sins, right? So this is done by taking a dip in Haura river. So त्रिपुरा की कोई महारानी थी, उन्होंने ये फेस्टिवल स्टार्ट किया था, and now it is being continued for years down the line. So this was it about today's current affairs, I guess. इतना ही था आज के लिए. No, इतना नहीं था. We have another question lined up. एशियन क्लियरिंग यूनियन. सो अभी आरबीआई ने अलाउ किया श्रीलंका को टू सेटल इट्स डेब्ट्स एंड पेमेंट्स आउटसाइड ऑफ द एशियन क्लियरिंग यूनियन. क्यों एशियन क्लियरिंग यूनियन में जितने भी डेब्ट सेटलमेंट होता है, दे आर ईदर डन इन यूएस डॉलर और डन इन जापानीज येन और डन इन चाइनीज रेमनेबी. ओके, सो टू अवॉइड दैट, क्योंकि अभी यूएस डॉलर की करेंसी बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है. Many countries, they are going through depreciation of currency against the US dollar. So to help the Sri Lankan economy further, I think इससे पहले भी जनवरी या फरवरी में एशियन क्लियरिंग यूनिट के बाहर डेट सेटलमेंट का अपॉर्चुनिटी दिया था इंडिया ने श्रीलंका को, RBI ने श्रीलंका को. Now this is the second time that the RBI has permitted Sri Lanka to settle its debt outside the ACU. ACU के headquarters का आपको ये बताना है. ACU के headquarters are basically in Tehran, that is in Iran. Okay, so these are FEMA के अंदर ये सारे regulations है जिसके अंडर RBI ने श्रीलंका को ये permission दी है, right? So US dollar, euro and Japanese yen. I was wrong. Chinese renminbi नहीं, US dollar, euro currency और the Japanese yen, इन तीनों currencies में ही settlement कर सकते हैं in the debt settlement under Asian clearing unit. So to avoid that, to mitigate or to bypass that, the RBI has allowed Sri Lanka to settle its debts outside the Asian currency clearing unit. You all know India के भी currency rupee है, हमारी country भी currency rupee है, but yes, they're same and different at the same time.
Okay, so now this was it for today's current affairs. I hope you all enjoyed the session. आपको मजा आया होगा. If you have any doubt, if you have any clearance, so these are some of a set of limited questions कराती हूँ, MCQs कराती हूँ, sourced from a set of very very important current events of the day. धीरे धीरे करके I will try to increase the number of questions. अभी तक brush up करने के लिए इतना बहुत है. Slowly and slowly, the number, the frequency, the difficulty level, the variety of questions will increase and improve. So you will see the change yourselves. Thank you so much for joining me live and liking the session. Do like, share and subscribe with your friends. If you found this session useful, tab tak ke liye take care. See you in the next class. Bye-bye.